आई गैदर्ड एवरीथिंग। मैंने ना सब कुछ Okay. इकट्ठा कर लिया, एक झोला भर लिया कि भी मैं ये चैनल इसके लिए है, ये चैनल इसके लिए है, ये वाला बंदा ये सिखा रहा है, ये कर रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर। आई I'm एम जस्ट Shishir Wadhvan, and in this podcast, I'll help and learn from Sunita, and I would like her to introduce herself to all of you. Yeah, hello everyone. I am Sunita Ratna. So I am a freelance content writer. And I left my 9 to 5 corporate job, I think 2 years back, and started my freelancing journey from the last year. And now from content writing to I am upgrading myself to copywriting. So now we will discuss more about copywriting and marketing from you. Shishir. Shishir. So, uh, before I say anything, do you have any question with which you want to start? कोई ऐसा question जो आपके मन में and wanted to ask me? Let's start with. Yeah. So last time I saw your podcast, your podcast with Sun. So got lot of clarity, like how should I create content and everything. So I just want to know the process, like how do you create content, how do you ideate everything, the structure, whether it's a reel, whether it's a carousel, text format, or anything else, text format, anything. Okay. So I will answer this question, but before this, I want to ask you why copywriting? Why you chose copywriting? So basically, it's an in-demand skill in these days. Okay. Although in the, I mean, AI तो चल रहा है, but copywriting बहुत high demand में है. And I think 2 years back, I have not heard about anything like about what is advertising, what is copywriting. Nothing. I am not into from marketing background also. But after writing content like blog posts and articles and this, so some of my colleagues, they are upgrading themselves into copywriting. So the thing is, it's bit challenging here to come into copywriting field, but I'm enjoying it. I'm enjoying it. Content writing seems to be easy. So you joined, you started copywriting because ये एक in-demand skill है and जो आपके आसपास लोग थे, they are also learning it, right? Yeah. Okay. So now my next question, I'm asking this question to understand you better, then I'll be able to give you your answer better. Okay? So Yeah. आपके जो question आप मेरे लिए लाए हो, मैं उसके आंसर बहुत अच्छे से दे पाऊंगा अगर मैं आपको जान लूँ. So my next question is, you talked about AI. So don't you think AI will take over copywriting? And what do you think about AI? That's the question. AI is very good. AI is very good. And और जैसे 3, 4 सब अपग्रेड वर्जन आ रहा है, ये अपडेटेड वर्जन के साथ और अच्छा ही आएगा एंड बहुत बेहतर ही आएगा, नो डाउट ऑफ दैट. बट द थिंग इज इट्स लाइक एन असिस्टेंट फॉर एवरीवन. Can't give everything, like something like even for example human opinion. This is much needed if whether it's the article, it's a carousel or anything, any piece of content. Human opinion in this AI will give you the existing data only. That's it. So it will help you a lot in anything, like in your research process, in your outlining process, in this type of thing. AI will help you, no doubt in that. But yes, with the help of AI, how can you grow? That's the bit you have to learn. That's what I am also looking for. So are you using AI with your copywriting right now, these days? So no, actually, as of now I am not getting any client. So I'm in the learning phase. Like so, a few books, through few YouTube channels, I'm learning. I didn't get any client. I have some projects like for content writing, not copyright. I'm writing the blog post and articles. Post and articles. Okay. So आप कितना time हो गया? Like when you started your content writing journey and now you are switching to copywriting, right? It's exactly 1 year. Because last May
2022 मई मंथ में ही आई हैव स्टार्टेड कंटेंट राइटिंग, लाइक एक छोटा सा इंटर्नशिप से ही मैंने शुरुआत किया था. एंड या इट्स एग्जैक्ट वन, या इट्स एग्जैक्ट वन. Okay. Okay. And what are your expectation from yourself? यानी कि अभी आप copywriting सीख रहे हो, so any specific goal कि आप copywriting सीखने के बाद में ये करोगी, या फिर कोई और भी स्किल दिमाग में कि ये भी मेरे को शायद सीखनी चाहिए copywriting के साथ, और you are just all in copywriting right now? सो द थिंग इज, देखिए, मैंने शुरुआत किया था लिंक्डइन से. तो फर्स्ट मेरा स्टोरी ऐसे हुआ था, मैं आई थी लिंक्डइन में जॉब सर्च किया था, बट मुझे धीरे धीरे पता चला फ्रीलांसिंग के बारे में एंड कंटेंट राइटिंग के बारे में. धीरे धीरे ये सब चीज़ें फिगर आउट करी. देन आई एम इनटू दिस लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ऑल दिस इंटर्नशिप, जॉब एंड ऑल दिस. बट कॉपी राइटिंग में अभी आई, और मेरा अभी का गोल यही है कि मतलब ये स्किल हो. मैं तो ऐसा नहीं बोल सकती आई वांट टू बी द बेस्ट कॉपी राइटर, बट एटलीस्ट इतना मास्टर करता है कि आई कैन गेट क्लाइंट्स एटलीस्ट. एंड या Why don't you वन say स्टेक that आई, you want to be master of copywriting? सॉरी, It's like, why don't you want to say that you want to be master of copywriting? बेस्ट कॉपी राइटर मीन्स someone, you heard about Gary Halbert and Joseph Sugarman and all this, yeah. So to मतलब उनके लेवल जाना, it's like you have to give that much time, and I want to give to copywriting at least minimum 5 to 7 years in this one career. Okay. Okay, so now I ask last question, फिर उसके बाद आपके question और मेरे answer, okay? Sure. If I ask that what is copywriting, Vilma will say. Copywriting is nothing but assembling assembling words that make sales, or that can convert your words that convert, you can convert sales, can bring sales. But in content writing, we are writing that the same word, but it's for education purpose or entertaining purpose. That is the difference. Okay. So what I think, like you said, content writing and copywriting, what I have observed and what I have learned, कि जो बढ़िया content होता है ना, चाहे वो written हो गया, चाहे वो video हो गया, that is actually based on the principle of copywriting. Content writing is there, but every good content is actually a copywriting, if you see. Because Yes, somehow very similarities are there. here's the thing. Copywriting is not just about the sales. Okay. For example, you are writing a copy, right? You are writing an email. So your email, okay, आप एक email लिख रहे हो तो उसका objective हो सकता है बस click कराना उस link पर. Okay. So here you are not making any sale. The only goal of the copy is to make that person click that link. That's it. Okay. आप वो सेल्स हो रही है, हो सकता है कि आप यू आर मेकिंग दैट यू आर उसको आप एक्शन करने पे मजबूर कर रहे हो, या कुछ ऐसी चीज कर रहे हो वो लिंक पर क्लिक करेगा. अब यहाँ पर होता है क्या, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ यूट्यूब वीडियो, देयर इज अ पॉडकास्ट, और देयर इज एनी फॉर्म ऑफ कंटेंट वी आर ट्राइंग टू मेक पीपल टेक एक्शन. सो इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट सेल्स. दैट्स व्हाई आई सेड कि जो अच्छा कंटेंट है एक्चुअली इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉपीराइटिंग. सो नाउ योर क्वेश्चन, फिर मैं आगे वाली चीजें बताऊंगा कि मैं कंटेंट, यू आर आस्किंग अबाउट मी कि मैं कैसे आइडिएट करता हूँ और कंटेंट बनाता हूँ. Yes. That's what you are asking. Yes. Like, see, I saw like before that. I mean, you told son like अपने पहले फाइनेंस में कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, एंड अभी शुरुआत क्या है मार्केटिंग एंड कॉपीराइटिंग, ये सब रिलेटेड. सो आपका लर्निंग प्रोसेस क्या है, लाइक आप मतलब कैसे सीख रहे हो, एंड हाउ यू राइट एवरीथिंग, हाउ यू आइडिएट एवरीथिंग, एंड या यू आर आल्सो इन द लर्निंग फेज.
So yeah, I want to know the process. So here's the thing. Uh, there are two ways I write. Okay, one writing and one writing is free flow of my thoughts of my day, which is actually important in copywriting. For example, right now I am having podcast with you. Okay, and I am listening your ideas, your answers. अब इस podcast के बाद there will be feeling inside me. हमें कुछ जब हम कोई चीज करके हटते हैं, so there's some kind of emotion that we feel. होता क्या है कि many people don't understand that emotion, don't give time to, you know, फीड दोज इमोशन कि उस इमोशन को समझने का टाइम नहीं देते. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पॉडकास्ट करा एंड आफ्टर पॉडकास्ट आई एम फीलिंग सो हैप्पी that I met a very good human being. I met a student like me who wants to learn, who wants to grow. Okay, I just felt it, I smiled, and most of people do this, and there is nothing wrong with it. What I do is I write that what I felt. This is a free flow. I may write a one page, I may not write even आधा पेज, दो पेज, जितना भी, which I feel writing. Yeah. This is not helping you in your copywriting journey directly, but how it will help you indirectly, that you are understanding human emotion of your own. Okay, but you feel after having podcast or after reading some books. उससे क्या होता है, कि एक चीज जो सिखाई गई कॉपी राइटिंग में, दैट आपकी जब कॉपी कोई पढ़ेगा या आपकी कोई वीडियो कोई देखेगा, how that person will feel after watching your video, how that person will feel after reading your copy. That's something you must know. कि मान लीजिए आपने कॉपी लिखी, ईमेल लिखा या कुछ एक ब्लॉग लिखा कॉपी राइटिंग को यूज करके, तो आपको पता होना चाहिए जब कोई बंदा इसको पढ़ेगा तो उसको कैसा महसूस होगा. Yeah. ओके, सो जब भी ऐसी चीजें हो रही होती हैं, ऑलवेज राइट. ये होता है एक तरीका जो फ्री फ्लो है, जो बस मेरे Free flow writing. Yeah. Second way I write is by consuming a good content. That's the only thing you should do right now if you want to go in copywriting. Consume content. You talked about Gary Halbert, okay, those people. Here's the thing. There are a lot of YouTube channel on copywriting as well. But Yes. यहाँ पर मैं जो एक चीज बताने वाला हूँ, बिफोर हाउ आई क्रिएट कॉन्टेंट, हाउ आई आइडिएट, यू टॉक अबाउट कि जैसे बड़े बड़े कॉपी राइटर्स हो गए, उनके जैसे लिखने में भी टाइम लगेगा. What I want you to do is observe it, and when you will observe it, you will find that those, you don't have to be like those people. When you write your own feelings, you find your own style. So maybe in 1 or 2 years, you will be the best copywriter because of your own style, because you found your own voice. Many people commit this mistake, right? कि मेरे को इस बंदे की तरह करना है because he is doing the best. इसको लगे 5-6 साल 10 साल तो मुझे भी लगेंगे. Of course, या तो 5-6 साल उसके जैसा बनने में लगा दो, या इतने ही साल तुम खुद को बनाने में लगा दो, या तुम्हारा क्या स्टाइल है उसको ढूंढने में लगा दो. So everyone has their own writing style when they write. The problem is people don't try to find it, don't try to polish it कि मेरा writing style क्या है. कुछ लोगों का writing style बहुत poetic होता है. Even in their copies, even the best copywriters are there. They try to write in very poetic and storytelling format. उनके जो emails भी होते थे started like कि no one का कोई chapter start हो रहा है. So they are not copying anyone, they just found their style. तो फॉर एग्जाम्पल उनका पोएटिक और स्टोरी टेलिंग स्टाइल क्यों है? बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं बचपन में वैसे कंटेंट कंज्यूम करा है, उनको वैसा कंटेंट पढ़ना पसंद है, तो इस वजह से वो उनकी कॉपी में झलकता है. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ऑफ कोर्स, लर्न फ्रॉम दीज पीपल, बट व्हाट आई वांट यू टू डू इज ट्राई टू फाइंड योर ओन वॉइस, ट्राई टू टेस्ट कि मैं ये लिख के देखता हूँ, ये लिख के देखती हूँ, हाउ विल पीपल फील, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस वे. मुझे तो ये लग रहा है कि लोगों को पढ़ के ये फील होगा, but what if उनको वो feel हो ही ना? It's okay. It's okay to fail many times to find your style. This is the mistake many aspiring copywriters, content writers just. They don't want to form their own style because उन्हें लगता है कि मेरा क्या style है, मैं तो नया नया आया हूँ. Yeah, I also actually thinking like the same way. मैं नया नया मेरा क्या style है? But you have your own style because you have your own style because you have your own life. You have your own stories. You have your own parents, a different life, so there is a possibility that you will form your own style with time. And of course, that style will be inspired and influenced by other
यू नो बिग कॉपीराइटर। ऐसा होगा कि वो जो आपका जो स्टाइल होगा उनसे इन्फ्लुएंस होगा, उनकी तरह नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी कॉपी पढ़ूंगा तो मुझे उस बंदे की याद नहीं है कि यार गैरी हार्वेट की तरह लिखा हुआ है या उस तरीके उस बंदे की तरह लिखा हुआ है। आई विल फील कि ये सुनीता के तरीके से लिखा हुआ है। यूनिक रहना दैट्स व्हाट या ऑफ कोर्स, बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ओके, so I wanted to give time. Okay, and now coming to your answer, how I did, I consume good content and I write what I feel after consuming that content. And again, one important thing, I research in the comment section. For example, मैंने कोई video देखी and there are people in the comment section which are saying कि यार अच्छी नहीं थी video, ये नहीं थी video. So when I watching this video, I felt something. I go in comment section, I see कि अब लोग क्या फील कर, एंड देन आई क्रिएट कंटेंट। एंड इसके अलावा लाइक इफ दिस इज आल्सो फ्री फ्लो। इसके अलावा अगर मेरे को बहुत ही रिसर्च बेस्ड कंटेंट करना होता है तो आई डू रिसर्च अबाउट डिफरेंट थिंग्स दैट आई विल टेल यू इन कमिंग आने वाले कुछ मिनटों में। एंड सो दिस इज हाउ आई क्रिएट कंटेंट, बट राइट नाउ just create what you are learning by giving your personal touch. Meaning कि मैंने एक कॉपी पढ़ी या मैंने कोई कॉपी एनालाइज करी, कॉपी राइटिंग के बारे में मैंने कोई नई चीज़ सीखी। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, फॉर एग्जांपल राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक वीडियो कंटेंट, सो लॉट ऑफ पीपल से कि लॉट ऑफ पीपल टीच कि बी कंसिस्टेंट, एंड दैट्स ट्रू। एंड नाउ यू गो एंड से टू पीपल कि बी कंसिस्टेंट। आप क्या कर रहे हो, एक चीज़ उठा करके आगे बोल रहे हो। दैट्स नॉट व्हाट यू शुड डू। While creating content, you heard it, कि stay consistent. So try to look at your life कि मैंने किसी और चीज़ में कब सीखा था कंसिस्टेंट रहना। फॉर एग्जाम्पल जब हम स्कूल में थे तो रोज होमवर्क करना, या स्कूल में बताया जाता था ये 10 वर्ड रोज लिखो या राइटिंग रोज करो, तो क्या मैं उस समय कंसिस्टेंट रह पाया था? अगर रह पाया तो किस वजह से? हो सकता है मेरी टीचर्स ने कहा हो, कुछ कहा हो। मीनिंग कि जब आपने कंसिस्टेंट रहना सीखा किसी भी चीज़ में, उस चीज को इस चीज से जोड़ दो दैट व्हाई यू शुड बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब और ऑन connecting the dots. हियर यू आर गिविंग योर पर्सनल टच। Yeah. कनेक्ट द डॉट्स कि आपने वो चीज की एंड गिव टू द पीपल। दैट्स व्हाट यू शुड डू, दैट्स व्हाट आई डू। ओके, सो आई होप यू गेट द आंसर। एंड व्हेन इट कम्स टू कैराउजल, ओके, कैराउजल का एक फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल, okay, let me show you if I can. Okay. Can you see this? Yes. Okay, so this is my first carousel that I made. So हर अब carousel को बनाने का ना हर किसी का स्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ऑन लिंक्डइन, सो वहाँ पे आई विल सजेस्ट कि ज़्यादा carousel, या इट मीन्स यू आर एजुकेटिंग carousel से यू मस्ट एजुकेट देम, बिकॉज वहाँ पे कितने भी स्लाइड्स बना सकते हैं, 15, 20, 30। सो वहाँ पे एजुकेटिंग वाला चीज़ रखना चाहिए। बट इफ़ यू आर क्रिएटिंग carousels on Instagram, so this is what I followed. जो इसको छोड़ देते हैं, ये हम उस पर बाद में आएंगे। दिस इज काइंड ऑफ हुक, कैप्शन और कैरेक्टर। नाउ हियर इज इट, यू मे हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ वीडियोस। सो दिस इज द फॉर्मेट दैट आई फॉलो इन carousel. Myth, okay, now examples, here's the truth. Myth यानी कि एक ऐसी चीज जो लोगों को लगता है कि ऐसी होती है, वो myth हम पहले उन लोगों को समझाएंगे अपनी फर्स्ट स्लाइड में, या फिर उसके बाद या दो स्लाइड्स में। फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे उस आसपास, उसको और थोड़ा क्या कहते हैं, उसको थोड़ा और बाहर डालेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, एंड देन एट द एंड वी विल गिव देम द ट्रूथ. Now, this is the example. You may have seen these types of videos. Okay, this is a myth which I'm trying to show to the people. And second, many people try to Alex or Moses style, hoping to achieve the same level of success. This is the myth कि काफी लोग
एलेक्स सरमोजी के जो कैप्शन है उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं विद द होप कि यार उनको सक्सेस मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द कैप्शन. दिस इज द मोड. ओके, बट हियर इज द थिंग. नाउ मैंने कोई एग्जांपल नहीं दिया शायद यहाँ, एंड आई जस्ट स्विच टू आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स द ट्रुथ. Alex success is not just about his caption, it's about something much deeper. Okay, now it's about his unwavering character and authenticity. Now Alex doesn't copy someone for likes and followers. Instead, he stays true to who he is and what he believes in. If you want to be successful, focus on developing your own authentic voice and style. So this. So इसके अंदर मैंने क्या फॉलो करा है, मैंने इसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करा. आई जस्ट गेव देम द मिथ एंड मैं उनको ट्रुथ की तरफ लेता गया, चलाता गया. सो दिस इज समथिंग. अब ये मेरे को कैसे ख्याल आया, व्हेन आई वाज सीइंग अ वीडियो व्हिच वाज सेइंग कि बहुत सारी वीडियोज हैं, एज आई पोस्टेड दिस पिक ऑल्सो, इसके अंदर कितने सारे लोगों ने वीडियो बना रखी कि कॉपी द एलेक्स रमोजी स्टाइल कैप्शन. सो आई थॉट कि कैप्शन का तो खेल है ही नहीं, इट्स अबाउट कैरेक्टर. सो दिस इज वन वे. Other way can be, दूसरा वे क्या हो सकता है कि you are educating. But what I would suggest you कि while educating on carousel on Instagram is little hard, because जब आप carousels बनाए तो उसमें ज़्यादा कैप्शन मतलब ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लाइन, that's it, एक लाइन. So that's the one rule कि ज़्यादा लिखना नहीं, सिर्फ 2 या 3 लाइन, एंड यू आर टेक देम टू द जर्नी, धीरे धीरे कि वो आगे पढ़, लाइक वो अपनी उसको स्वाइप कर. दैट्स व्हाट यू शुड डू. सो आइडिया कैसे आया, आई वाज वाचिंग अ वीडियो एंड सडनली आई रियलाइज कि कैप्शन का तो गेम है ही नहीं, बिकॉज आई कैन मेक अ वीडियो एंड पुट कैप्शन. सो मैनी पीपल बिलीव कि कैप्शन का खेल है, बट इट्स नॉट द गेम ऑफ कैप्शन. तो दिस इज द मिथ आई गॉट एंड आई एम गिविंग देम द ट्रुथ. आई नो द ट्रुथ. बीच में एग्जाम्पल देंगे. एंड ओके, एंड हुक. And it comes to hook, I am not that good at hook. I am still learning. But hook जो होना चाहिए, it should tap into their emotions. That's what we learn in copywriting as well. कि उनके emotion उनको tap करना चाहिए, या फिर join the conversation which is already happening in their head. कि वो सोच रहे हैं कुछ लोग कि यार कैप्शन कुछ और लगा लूँ क्या. They are thinking. और हमने जैसे एक पोस्ट बना दिया which is about this, so they will see this कि अच्छा कैप्शन है क्या किस बारे में. So that's how I do the things. I hope it helps. Yeah. So you have any question about this? So what do you think about AI? Okay. By in the context of copywriting. For everything, not only copywriting. For everything. Okay, let's start. I think there are a lot of things. So I'll start with copywriting. Many copywriters will lose their job. That's what I think, because कि जो एक तो one thing I observed कि everyone think that they can write, they can be a copywriter, but in reality it's not about just writing. You can write, anyone can write about anything. If I tell them Yeah. के बारे में लिखो, they will write it. Copywriting, the real copywriters are actually, I will say, the attention manager. They know how to grab the people's attention. They know how to use emotions. Okay, they know how to make people take action. They are the best researcher out there. So these things make a copywriter, not just writing. So many copywriters out there think that they are copywriters, but in reality they are not copywriters. They are just copying someone's style or trying to call themselves copywriter to get clients, and they are With all the template prompts like that. Yeah, that's the thing. उनको लगता है कि वो copywriter हैं, but in reality they are not, because AI is there. If you know, so that's what I think. कि बहुत सारे copywriters जा रहे होंगे, टाटा बाय बाय हो रहा होगा. That's why they are scared as well. But I think जिन्होंने copywriting सीखी है, because they think and they love the copywriting. They think that they can do better at copywriting, so वो replace नहीं होंगे. Because if I love someone, for example, I love copywriting, I don't want to lose it at any cost. And now suddenly AI आ जाता है और सारा हर जगह डर का माहौल हो जाता है. I won't run away from the people I love because of some
बैड टाइम, कुछ अगर बैड टाइम बिकॉज ऑफ सम Yeah. That's the thing. That's the thing. मैं अपने जिन लोगों से रन अवे, आई विल लर्न दैट। अगर कोई चीज़ आ रही होगी हमारे बीच में, सो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट, आई विल ट्राई टू लर्न इट। तो भाग वही रहे होंगे वो जॉइन कॉपीराइटिंग जस्ट बिकॉज की पैसा बहुत है, वो भाग रहे होंगे अब एआई की तरफ या फिर किसी वीडियो एडिटिंग की तरफ, कि वो चीज़ सीखते हैं पैसा बहुत है। इट मे और मे नॉट वर्क फॉर देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट कि सही है गलत है, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज इफ आई रियली लव इट, if I really love someone, I'll solve the issue which is between us. For example, if I see कि मैं copywriting चली जाएगी मेरे हाथ से, so I will learn AI. Okay? Okay. That's the thing. That's the first thing you should see this way. अगर तुम्हारा प्यार है ही नहीं उसके प्रति, and so ठीक है, then you are going to lose. AI will fail. That's something else. So if you really love तो something, आपने कब शुरू किया था जैसे वो मार्केटिंग एंड कॉपीराइटिंग का जर्नी? कॉपीराइटिंग का जर्नी okay. So it's been, I will say, 1 year when I started Image You. Actually, I didn't start with copywriting. I started with a lot of things. That's the mistake I did. I didn't know what I want to do. I tried with coding as well and some designing. Then I switched to the finance thing. मैं फाइनेंस के साथ इसलिए जुड़ा रहा बिकॉज इन माई 9th 10th एंड 11th 12th लाइक 4 years में हमको एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, वोकेशनल सब्जेक्ट विच वॉज अराउंड फाइनेंस, तो देयर वॉज ऑलवेज इंटरेस्ट अराउंड फाइनेंस। एंड देन आई वेंट टू कॉलेज फॉर 3 months, देन आई लेफ्ट। सो जो 3 महीने थे उनमें भी मैंने वहाँ पे फाइनेंस पढ़ा, एंड देन व्हेन आई एंटर्ड इन द मार्केटिंग स्पेस आई सॉ लॉट ऑफ पीपल क्रिएटिंग फाइनेंस कंटेंट, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद फाइनेंस कंटेंट एंड स्टार्टेड लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट। बट धीरे धीरे मेरे को समझ आया that if you want to grow on socials, you must know marketing. Then I came across copywriting. And why I loved copywriting? I didn't learn copywriting to become actually a copywriter. Because मैंने ये चीज़ देख ली थी कि भी जो content है और बढ़िया content, like right now speaking to you, if I am speaking this way, और मैं आपके emotion, like initially I asked you questions to understand you better, to understand your emotion. That's happening because I know how copywriting works. And when I say how copywriting works, it shows how emotions work. It shows what words I'm using, what define me. For example, whatever word you use, it actually defined you. So I was able to understand you because of copywriting. And now I make YouTube. And that's the most important part in every field. Yeah. So copywriting in content creation, copywriting is the thing that you have to learn even if you are not going to be a copywriter. That's why I started learning it. That's the first reason. Second reason, that I love writing. I have always, since childhood, I've always been writing stories and poems. So I thought कि मेरे को लिखना तो आता है. Let's just try copywriting. So हाँ, उसमें थोड़ा मजा भी आया. But again, in those moments I realized it's not just about writing. Okay. I think the research part is the thing. Not everyone knows. Most how to important. research And I think something. जो कॉपीराइटर जो बेस्ट वाले जो भी है, आई थिंक वो बेस्ट रिसर्च कर सकते हैं। दैट्स वाई राइटिंग तो बहुत कम ही है देखा जाए, तो आप अच्छा रिसर्च कर लेते हो, देन आई थिंक कॉपीराइटिंग आपका मतलब 80% काम तो हो ही जाएगा। 80% काम तो हो ही जाएगा। Exactly. So that's how I started. Okay. So what how did you learn about copywriting, like books or anything else? Understanding human emotion or like that. Okay, you tell me first कि आप किन channels को follow करें सीखने के लिए, और which channel you follow to learn about copywriting? Copy as of now, like copy that, and Neville from copywriting course. I'm following him, and Alex Catoni. Copy that का एक course है 4 hours का. Have you 5 hours, 5 hours. I watched that one. I think 2 या 3 days पहले I think वो मेरा complete हुआ. उनका एक 21 days का फ्री ईमेल सीरीज है, लाइक उनका पहला दिन का ही आता है ये फायर का, ये मतलब फंडामेंटल्स जो है, तो मेरा 3 days पहले ही वो खत्म, मेरा 3 days पहले ही strongly following copy that actually. वो हाँ, so I think that course, I also started with that course.
आई थिंक 6-7 महीने पहले मैंने वो कोर्स किया था. So what things did you learn after watching that course? सॉरी क्या क्या चीजें नई नई सीखने को मिली उस कोर्स के बाद? कुछ ऐसी चीजें जो अच्छा, फंडामेंटल्स के बाद पता चला. बहुत चीजें, जैसे एक छोटा सा चीज मेरे को ये भी पता चला, जैसे हम फ्रीलांसर स्पेशली जो है, फ्रीलांसर्स हम अपने क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं मोस्टली. तो वो लोग या तो जैसे मैं कंटेंट फॉर एग्जांपल लिखती हूँ, तो कुछ क्लाइंट्स मुझे ब्रीफ देते हैं, कुछ एसईओ के लिए गाइडलाइंस देते हैं. अगर वो दे देते हैं इट्स इजी. कुछ क्लाइंट्स नहीं देते हैं, हमको खुद को कीवर्ड्स रिसर्च करना पड़ता है एंड ऑल दैट. तो हमको अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट रिक्वायरमेंट ओनली वी हैव टू डिलीवर द वर्क. बट इन कॉपीराइटिंग तो आपको कुछ लिखना है तो आपको कस्टमर के हिसाब से सोच के लिखना चाहिए. तो वो एक चीज आई थिंक बोले होंगे, आप भी देखे होंगे कि व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग यू डोंट हैव टू राइट लाइक क्लाइंट का सर्टिफिकेशन नहीं, बट कस्टमर का ये देखना चाहिए. ये एक चीज सीखना को मिला. एंड हाउ यू रिसर्च, द बेस्ट थिंग इज हाउ यू कैन रिसर्च like RIO, RIOA, one reader, one idea, one action, one offer. That's the thing. The most important thing I learned in that course. Yeah, this is the thing. And the last part, editing and all this, I have learned that before also in normal writing also. But the thing is, yeah, about RIO, how we explain and the research part, that's excellent. That's excellent. Exactly. Okay, so have you started practicing what you have just learned, like teach that in whether Yeah, practicing in the sense like some headline, and I have one doubt actually. Few copywriters are telling like hand copy will help you in long term. Few copywriters are telling like old sales letter will not work that much, hand copy will not work. So what do you think about this? Have you heard about hand copying? Even in the prior fundamental class also, he told about hand copying the popular sales pages and all this. What do you think about it? Here's the thing, you should hand copy the copy because it's not about कि वो जो कॉपी लिख रहे हैं कॉपी में like hand copying it, वो वहाँ पर हम अपने क्लाइंट के लिए लिखते हैं. What happens is again जब हम लिखते हैं पेन या कॉपी पर, our thoughts gets clarity. That's the real thing. कि हमारे thoughts में जो clarity है. For example, you already know about this one idea, that your one idea should be clear. One idea यानी कि आपकी कॉपी है किस बार. So that clarity comes when you hand copy your copy or others' copies as well. For example, I was have that. What you can do is download it. For example, this is how to win an influence friend. So इसके पीछे मैंने कुछ लिख रखी है कुछ चीजें. So this is something you should read. ये बहुत पुराना है of course, but अभी कि हो सकता है कि जो principles इसमें use हुए वो आज use ना हो. But we are not copying principles or we are not copying exact word. What we are trying to learn is कि उस समय इस बंदे ने ऐसा क्यों लिखा, क्या सोच के लिखा. Thought process. आज के युग में, आज के समय में हम वैसा सोच पाए. We are trying to think like copywriters. We are not trying to copy. So that's why you should read all those copywriters जो भी पुराने भी है. Not to copy कि ये वाली लाइन अपनी कॉपी में यूज करो. To understand कि उस समय क्यों लिखा, उस समय के लोग कैसे रिएक्ट करें, और फिर आज के लोगों को समझ के वैसा ही सोचकर कुछ बनाना. और जब आप वो कुछ बनाएंगे, so there is the moment where you will find your own voice and your own style. जो कहते हैं कि पुराना कॉपी मत करो, ऐसे मत करो. So I don't agree with it. You should always see other copywriters कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं. And so are you hand copy? Here's the thing. Yeah, I do. Okay. But मैंने there is what I want you to do, like you have just completed the course, जो उसमें practices बोली हैं, keep doing it because I kept doing it. Right now I have stopped because I am jumping into this podcasting thing. I do sometimes but I'm still writing like free flowing of the things. As I said,
वो मैं लिखता हूँ, बट अभी मैं कॉपीज नहीं लिख रहा. आई राइट अबाउट माई कॉन्टेंट. आई थिंक कि मैं कॉपी लिख रहा हूँ, बिकॉज एक्चुअली आई एम राइटिंग अबाउट माई content on social. So I'm using the principle of copywriting, but I'm not copywriting for the freelancing right now. So what I want you to do is I will share a playlist with you. So that playlist, उस playlist में नाम बोल रहा हूँ उस यूट्यूबर का जिसने playlist बनाई है, कसाबा करके कुछ नाम है, मैं pronounce नहीं कर रहा. I will share that link of the playlist. तो उसके अंदर हमने, I don't know if you know it, 100 days में like 100 sales letter का breakdown करा है. Yeah. I think I had, yeah. I have saved this playlist 100. Yeah. Okay, so that Conversion something कुछ channel है उनका. Conversion. game of conversion, right? Yeah, got it. हाँ. So that's what you should do. कि उस टॉपिक को लेकर के उसको समझो, उसको लिखो रोज. Okay, that's the one thing. And again, just start, because in अभी कोर्स करके भी आपको समझ आ गया होगा that you can start freelancing right now, even if you just started as a copywriter. Just start. That's the thing. Again, और उस जो आपने कोर्स किया है कॉपी दैट, तो उसके अंदर पूरा बताया है हाउ टू गेन क्लाइंट्स एंड Yeah. डिस्कॉर्ड सर्वर, जॉइन इट. और जो भी आप कॉपी लिखें, जस्ट सेंड इट फॉर द क्रिटिक्स. आई हैव सेंट अ लॉट ऑफ कॉपीज फॉर क्रिटिक्स. उन्होंने मेरी कॉपी किटी. इवन सम इवेंट्स, इवन ऑन लाइव माई कॉपी गॉट क्रिटिक. सो वो भी हो सकता है कि अगर वो आपकी कॉपी क्रिटिक करे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. तो ये चीज़ हो Okay. सकती है. But what's the first one mistake that I did, and I think you may do as well, but I don't want you to do, is this: I gathered everything. मैंने ना सब कुछ Okay. इकट्ठा कर लिया, एक झोला भर लिया कि भी ये चैनल इसके लिए है, ये चैनल इसके लिए है, ये वाला बंदा ये सिखा रहा है, ये कर रहा है, बट मैं कुछ नहीं कर रहा. आई एम जस्ट कंज्यूमिंग एंड कंज्यूमिंग, नॉट क्रिएटिंग. तो वो चीज नहीं कर रही है. See, एक चैनल how is this बहुत- pain? it's I a- think I was in this phase at least 2 to 3 months. एग्जैक्टली ये होता है कि हम कंज्यूम करते जाते वी आर नॉट क्रिएटिव. और राइट नाउ यू नो लॉट ऑफ चैनल विच आई एम टॉकिंग अबाउट. दैट्स व्हाई आई गॉट सेंस कि आपको बहुत सारे चैनल पता है. सो जब बहुत सारे चैनल पता होते हैं तब हम कुछ नहीं कर रहे होते, वी आर जस्ट कंज्यूम. सो दैट तो मैंने एक पॉडकास्ट का भी देखा दूसरा भी, और उसमें भी बोला है कि हम लर्निंग बोल के हम वीडियो कंज्यूम करते जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते. That's something I did as well. Right now I'm not consuming anything. मैं जितने भी मेल्स आते थे मैं वो सारे पढ़ता था कि कॉपी राइटिंग कैसे कर रहा है, कैसे मेल्स कर रहा है. फिर किसी की वीडियो देख रहा हूँ, फिर किसी की वीडियो देख रहा हूँ, फिर पॉडकास्ट सुन रहा हूँ. एंड एट द एंड ऑफ द डे मेरे को पता है सब कुछ है, बट मैंने करा कुछ नहीं है. Yeah, I can relate with this. तो फिर सिर्फ 2 चैनल बहुत है, लाइक एक गेम ऑफ कन्वर्जन एंड कॉपी दैट एंड जस्ट राइट. Okay. आपको पता चल गया, जस्ट राइट. Yeah. ये बहुत मुश्किल है, बिकॉज वी ऑल नो कि क्या करना चाहिए, बट हम कर नहीं पा रहे. और दिस इज द हार्ड पार्ट, बिकॉज हार्ड पार्ट होता है वो चीज को करना. इनिशियल डेज पे आपने मतलब क्या क्या एक्सरसाइजेस किया है? जैसे आप अभी बोले कि हैंड कॉपी आपने काफी टाइम तक किया एंड अभी आप बस कर रहे हैं, ओके. देन हम जैसे और क्या क्या जैसे प्रैक्टिसेस किए हैं? So what I did was, and I think you should do it as well, open your Facebook or Instagram and just scroll, and the first ad you see, just take the screenshot, go to that ad and write the copy for that thing. For example, Okay. as I said, I was consuming a lot, and I wanted to start my YouTube, so I was seeing a lot of content of YouTube. So I got the ad of Ankur Wariku, how to YouTube. Okay. So I wrote my copy around how to YouTube. I did all the research. I did everything and I wrote copy about how to YouTube. So that's what you're doing. So अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी फेसबुक खोल के जो पहली एड जो आपकी आ रही है उस पर कॉपी लिख रहे हो, इट मीन्स यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट थिंग. दैट्स व्हाई वो एड आ रही है फीड पर. दैट्स अ फर्स्ट थिंग. सो वहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि वो जो देख रहा है कि अच्छा ये एड है, जस्ट गो एंड सी कि अच्छा ये हाउ टू यूट्यूब. देन आई रिसर्च
you know already know about competitor research. So मैंने अली अब्दुल का एक यूट्यूब कोर्स था, उसका रिसर्च करा कि कॉम्पिटिटर ये क्या कर रहा है. Then there is Think Media, उसका रिसर्च करा. And then I wrote a email sequence for how to YouTube. Like first day कौन सा sequence भेजेंगे, second day कौन सा sequence भेजेंगे. So that's what I did. तो ये आप कर सकते हो जस्ट फेसबुक एड से, क्योंकि अभी ना कुछ पता नहीं. फॉर एग्जाम्पल देर इज, मैं बहुत फैसिनेटेड था अगेन फाइनेंशियल कॉपी राइटिंग से. मेरे को लगता था कि आई वॉज इन टू फाइनेंस, सो मैं फाइनेंशियल कॉपी राइटिंग सीखूँ. बट फाइनेंशियल कॉपी राइटिंग इज सो मच कॉम्प्लेक्स एंड ट्रूथ इज कि फाइनेंशियल कॉपी राइटिंग doesn't need any financial skills. It only needs high skills of copywriting. Copywriting में जो फाइनेंशियल, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉपी राइटर्स है, एक्चुअली दे वर द स्टूडेंट्स ऑफ साइकोलॉजी एंड इंग्लिश ऑनर्स ऑफ लिटरेचर. सो इट्स नॉट अबाउट फाइनेंस व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल कॉपी राइटर. तो मैंने वहाँ भी टाइम बहुत वेस्ट करा ट्राइंग टू राइट फाइनेंशियल कॉपी राइटर. Maybe that's what my ego, you can say that's what my ego would say to me, no, I can be a financial copywriter because I know finance. But in reality, when I started copywriting, I found कि मैं e-commerce वाली copywriting ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ, या info products ज़्यादा कर ले, course के लिए ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ. So that's what you will only find when you will start writing. So वो जो ad आ रही है, you can start doing it and write it daily. Effort उठा के daily लिखो, उसको critiques पे डाल दो. That's it. That's the thing you should do and start reaching out to the clients. Now, कुछ samples like you said, उसको क्या कहते हैं, the samples जो होते हैं लिख लो and made a kind of portfolio thing in Google Docs. You know about Google Docs. वहाँ पर अपने portfolio कुछ लिख लो and even include your content writing pieces as well. Okay, you can make 2 portfolio as well if you are, you know. Actually, I already have a portfolio about my content writing. That service. I just need to add this service, like copywriting service. I can do this both or something like that. So start doing writing copy for these things. जो भी आप ऐड देख रहे हो उसकी कॉपी लिखो. इवन तो कॉपी अच्छी नहीं है, इट्स ओके, उसको पोर्टफोलियो में डाल दो. धीरे धीरे अगर अच्छी हो रही है उसको हटाते जो डालते जो, जस्ट स्टार्ट टू क्लाइंट एंड लिखना स्टार्ट कर दो. दैट्स व्हाट I want you to do. Again, we all know what we should do. It's all about implementing. So I want you to implement. And जो वो 100 days sales letter breakdown है, you can do that as well. बहुत clarity मिलेगी, बहुत चीजें समझ आएगी. So मतलब आपने वही 100 sales letter को hand copy किया था or something different? मैंने word to word लिखा था. मैंने 100 नहीं करे, मेरे का मैंने 10-15 करी, फिर मैंने छोड़ दिया था. शुरू के 10-15 लेटर्स हैं, मैंने बुक करी. जब भी मेरे पास ये प्रिंट आउट्स भी हैं, लाइक ये वाला जो है ना, ये आप वहाँ पे देखोगे शुरुआत में ही है, ये है विजन थ्रू ब्रेक थ्रू, ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा शुरुआत में. सो आई टुक दिस एंड आई रोट अबाउट दिस. एक ये है, मैंने थोड़ा हैंड कॉपी भी करा हुआ है. सो आई इवन ये भी आप प्रिंट आउट निकलवा के ऐसे पूरा कर सकते हो, बिकॉज आई लव दैट थिंग कि अच्छा ऐसे लिखते हैं. तो मैंने 10-15 किए हैं एंड यू कैन डू इट एज वेल, बिकॉज 10-15 बाद वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है. इट जस्ट स्विच टू द फाइनेंशियल कॉपी राइटिंग मेकर 2021 में, तो मेरे को वो चाहिए भी नहीं था, बट यू कैन वॉच इट इफ यू वांट. और हैव यू रेड एनी बुक्स? Okay, books. So there is a book, I think उस कोर्स में भी आपको पता चल गई होगी, 16 वर्ड सेल्स लेटर करके कुछ है. 16 एक्चुअली काफी बुक्स रेकमेंड किए हैं वो कोर्स में. 16 वर्ड्स तो रेकमेंड किए हैं. 7-8 बुक्स उन्होंने कर दी, 7-8. बट अगेन इट्स नॉट अबाउट बुक्स. ओके, it's not about books. Implementing, just learn the one thing and implement. If you have watched that 5-hour course, it's more than enough. Okay, books अगर पढ़नी, so for example you can read 16 words sales letter. Even on WhatsApp I can share the PDF. I still have that PDF. उसको पढ़ लो, you will understand about words, that how to use word. And other than that, the breakthrough advertising, उसकी PDF मिलना बहुत मुश्किल है. And even on Amazon, पता नहीं क्यों इतनी महंगी है वो किताब, 70-80 हज़ार रुपये की किताब है वो.
because वो limited edition है और print नहीं हुई. That's the reason. हाँ. So breakthrough advertising, हाँ. about that breakthrough advertising and marketing में, if you want to understand other out of copywriting, it means कि जो आपकी copywriting का चीजें सिर्फ अगर मैं अपना business चला रहा हूँ, for example I have e-commerce business or anything online business, so copywriting के अलावा भी बतेरी चीजें जो मेरे को में रखनी. It means जो बतेरी चीजें कह रहा हूँ, it's actually a funnel. So this funnel में आपका क्या role है copywriting का? So if you want to understand this funnel thing, so you can read Russell Brunson's .com secret or chart if you want to know about funnel. कि आपका रोल कहाँ है और कैसे एक ऑनलाइन बिजनेस वर्क करता है. ओके. या मैं तो अभी रिसेंटली एडमी कॉपीराइटिंग यू हैव हियर्ड अबाउट दिस बुक. ये इसका शुरुआत हुआ है. लेट्स सी. Actually, that course also, they told like in another video only, they told first initially read 1 or 2 books, then start rewriting and everything, whatever action you want to take. Don't overwhelming like learning is the main thing. Only reading books only thing will not work. Exactly, because होता क्या है ना कि एक बुक को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लग जाता है. हाँ. एंड अगर हंसी आपने 5 आती है. बार देखा है सब ट्विटर पे they are telling like in this they are giving some 30-day challenge or something like that, and you have to read this as fast as it. तो अरे एक बुक को पढ़ने के लिए उसका तो कॉन्टेक्स्ट तो समझना पड़ेगा ना. एंड एटलीस्ट आपको 300 पेज का मैं अगर पूरा स्पीड से भी जाऊँ, मुझे तो मिनिमम 5 days लगेगा. मैं मतलब मिनिमम बोल रही हूँ, और वो लंबा जाएगा तो पता नहीं, बहुत ये हो सकता है. बट 2 दिन में आप एक बुक पढ़ो, आई दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी टाइप लगता है. नॉट माई कप ऑफ टी टाइप लगता है. Exactly, and here's the thing that don't read too many books, okay? But I learned, I think Alex Hormozy said this, he said these words that I don't read many books, I read one book many times. Okay, कि एक किताब को बार बार पढ़ना and कई किताबों को एक बार पढ़ना. Okay, but right now I'm going to teach you a lesson which I learned by myself, and the lesson is कि जब वहाँ पर उन्होंने ये बोला ना कि read one book many times, तो वहाँ पर if I'm just copying, so मैं क्या करूँगा, एक बुक को बार बार पढ़ूंगा because I'm following Alex Hormozy, I am copying and trying to be successful, and that's where you commit mistake. Reason कि अब जहाँ पर जब आप observe करोगे, when you try to observe, that's the best thing you should do. Observe. जब observe करने में मुझे पता चला that not every book is meant to read many times. That's the thing. ये चीज आपको खुद पता चली. So that's the journey of being a good learner and a good observer. कि हर बुक को बार बार पढ़ने की जरूरत है ही नहीं. Yeah. And the question is कि why Alex Hormozy said कि एक बुक को बार बार पढ़ो? Because he read books like How to Win an Influence Friend. He read books like Influence, that Art of Persuasion as well. So बहुत सी किताबें हैं वो हाँ है पढ़ने लायक बार बार. Because whenever you read it again and again, you will find something new. Yeah. Because How to Win an Influence Friend. How to Win an Influence Friend. We are meeting new people daily. We are meeting new friends daily. So we are meeting different personality. So मैंने किताब पढ़ी How to Win an Influence Friend. अब 10-15 दिन हो गए मैं कई और लोगों से मिला. And now I'm again reading Win an Influence Friend. So ये possibility है कि मुझे कुछ नया सीखने को मिले. Because मैं dot connect कर लूँगा कि हाँ मैं उस बंदे से मिला था. So ऐसा कुछ हुआ. So that's why that book is meant to read again and again. But not every book is meant to read again and again. And now you as a learner, you have to क्लासीफाई कि अच्छा ये किताब को मेरे को अपने साथ रखना है बिकॉज इट्स गोइंग टू कीप टीचिंग मी. ये किताब है मैं एक बार पढ़ लूंगी हो जाएगा बाद में कभी देख. सो दैट्स वेयर अब नाउ आई एम सेइंग दिस सो पीपल आउट देयर लिसनिंग मी और फॉर एग्जांपल यही चीज मैंने अपनी कॉपी में लिखा दे विल रीड यस ऑफ कोर्स ये चीज है. सो हियर आई फॉर्म माय ओन वॉइस बाय ऑब्जर्विंग. दैट्स व्हाट यू शुड डू. नाउ हियर आई एम जस्ट अ लर्नर like just who are getting started. But I observed, I wrote, and now I have my own ideas which people would love to listen and would love to follow. Yeah. So that's how you create your audience. On brand, yeah.
Yeah, that's Okay. great. Anything else you want to ask? No. And lot of Okay. great, So great perspective I can learn from you. Talking. this means a lot coming from you. Okay. Now I want to ask you some questions. Let's see. Yeah. So right now you are creating content on Twitter, right? Mm-hmm. Okay. So why you chose Twitter as your content creation So, platform? I did this mistake. I started creating content on LinkedIn. So initially, I was not that much active on LinkedIn. First 3 months मेरे बहुत बढ़िया गए. I have a mentor at the time, and what he is telling, I'm doing the same thing. Gather few content on one topic and mix match like this. सो लिंक्डइन पे मैंने ऐसे शुरू की. देन वही एक इंटर्नशिप हुआ, देन जॉब हुई, छोटा मोटा काम बहुत चल रहा था. एंड इतना हेक्टिक हुआ, मतलब प्रेशराइज वाला काम था इनिशियल डेज पे, तो पूरा कंटेंट ही बंद कर दी. देन आई थिंक it doesn't matter about the platform, whether it's LinkedIn, whether it's Twitter or Instagram or anything else. So, I think in today's day, your personal brand means a lot. Whatever you are doing, your personal brand means a lot. So the one mistake I did at that time, I stopped. And कल शुरू करूंगी ऐसे प्रोक्रेस्टिनेट होके काफी महीने चले गए, और मैं अभी तक लिंक्डइन शुरू नहीं कर पाई. You can check my LinkedIn also. I have in 3 months I have engaged with so many people. I'm also an introvert. I don't I mean initial days पे मुझे लोगों से बात करना बहुत awkward लगता था, बट मैंने मीटिंग्स किया, लोगों क्या करते थे लोग, ये सब जानने का कोशिश की. एंड वही धीरे धीरे पता चला कि ऐसे से ये फील्ड्स हैं, ऐसे से ये सब है. तो विद इन 3 months मेरा बड़ा अचीवमेंट ये था कि 500 से मैंने 4000 फॉलोअर में लाया. तो इट्स नॉट लाइक रैंडम. आई मेक सम जेन्युइन कनेक्शन आल्सो देयर. देन अल्टीमेटली इट स्टॉप. On LinkedIn? बट ऑन लिंक्डइन. LinkedIn? यस. Okay. यस. सो अभी तक वो लिंक्डइन पे मैं शुरू नहीं कर पा रही हूँ. पता नहीं क्या मुझे स्टॉप कर रही है. आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट. बट या सो देन अगेन मतलब सब पुश करते हैं कि आपको कंटेंट क्रिएट करना ही चाहिए, व्हिचएवर प्लेटफॉर्म है. सो मुझे लिंक्डइन में जाना पसंद नहीं आ रहा था, तो व्हाई नॉट, मतलब और एक फ्रेंड से मेरा बात हो रही थी. देन मुझे ट्विटर का बिल्कुल आइडिया नहीं था. आई डोंट हियर अबाउट एनीथिंग लाइक ट्विटर में भी कुछ ऐसे, मतलब हमारे ऐसे फ्रीलांसिंग रिलेटेड हो, ये सब रिलेटेड कुछ कंटेंट ट्विटर मेरे दिमाग में आता था. मीन्स इट्स फॉर सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस लाइक दैट. दिस इज द थिंग मतलब आई हैव माइंड. तो मुझे ट्विटर का पोटेंशियल के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था. देन मेरा एक फ्रेंड बताया कि ट्विटर में भी ऐसे से होता है, बट यू हैव, मतलब काफी टाइम लगता है ट्विटर में ग्रो करने के लिए. सो थोड़ा ये भी थोड़ा चैलेंजिंग लगा, तो मैंने लिंक्डइन ट्राई किया, तो व्हाई नॉट ट्विटर. देन आई स्टार्टेड माय ट्विटर, बट या इट्स गेटिंग बिट डिफिकल्ट इनिशियल डेज पे, क्योंकि ट्विटर में काफी लोग आपका ना, जैसे मुझे तो लगता है इंडिया से बहुत कम है, बाहर के लोग बहुत है, बट दे आर हैप्पी टू हेल्प यू, दे आर सपोर्टिंग. लिंक्डइन थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक. जेन्युइन कनेक्शन तो बनता है, बट प्रोफेशनल लगता है. आप कुछ भी पोस्ट करो, जॉब सीकर्स आर देयर, योर बॉसेस आर देयर, इवन इन ऑन ट्विटर आल्सो, बट ट्विटर थोड़ा फ्रेंडली लगता है प्लेटफॉर्म. So this is the main reason I have joined Twitter. This reason I have, even I want to come on Instagram also, but I think Sun told you to एक कंटेंट तैयार करो एंड उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म में ये करो, वेदर इट्स कैराउजल और एनी. बट इंस्टाग्राम पे मैं, मतलब मेरा वैसे अपना एक पूछा था सन को कि एक प्लेटफॉर्म पे फोकस करूँ या मल्टीपल पे. आई थिंक आपने पूछा था, करेक्ट. तो मेरा भी यही क्वेश्चन था कि पहले ट्विटर में मैं कुछ ये आ जाए, ऑडियंस आ जाए, देन आई विल गो टू इंस्टाग्राम और लिंक्डइन व्हाटएवर एनी, मतलब सेकंड जगह, देन अगेन ऐसे करके.
But I think Sun's advice is more मतलब वो थोड़ा legit लगा. Instagram भी शुरू करना चाहिए. It's not possible. Perfect. So here are a few things that I want you to do, because right now, as I said, that when I realized कि मैं बहुत ज़्यादा consume कर रहा हूँ और create नहीं कर रहा हूँ, so when I just start creating, so मुझको ideas की कभी दिक्कत हुई नहीं. Okay. For example, if we are talking about Alexa Mosley, I know because I have watched a lot of podcasts. I can say I have observed, I have learned. So there is a lot of things of my own insight. So there are no shortage of ideas. So that's the first thing you should say to yourself. Ki the rule of creating great content is to consume great content. So as a consumer, I can sense that you have consumed very good content, but now you have to create. What I want you to do is, when you are doing sales breakdown, and एक sales breakdown में I don't know कितना time लगेगा, कम से कम आपको आधा एक घंटा लग सकता है. I want you to copy that thing, actually, exact copy, whatever you are learning, whatever words that person is using, game of conversion with, जो भी snippets या points वो बता रहे हैं, I want you to make carousel or a Twitter post. That's up to you. But I would suggest that if you want to do freelancing, you should do LinkedIn. That's something I believe. Because Twitter is there, Twitter में बहुत अपने benefits है. But अगर freelancing में घुसना है, I call in. और काफी अच्छे copywriters भी हैं LinkedIn पे, Twitter के मुकाबले, जो कि professionally जिन्होंने अच्छा काम करा है. Okay. Twitter पे I see a lot of students who thinks that they are copywriter, but they are not. वहाँ पे मतलब कि ना ढूंढना पड़ेगा कि बढ़िया बंदा कौन है. और लिंक्डइन पे भी ऐसा है, इंस्टाग्राम पे भी ऐसा है, आई थिंक हर जगह ऐसा है. बट आई सजेस्ट ट्विटर पे ज्यादा है वेयर यू कैन फाइंड. हां, प्लस कि वहां पर कैराउसल वर्क्स मच बेटर देन इंस्टाग्राम लिंक्डइन पर. वो एंगेजमेंट ज्यादा लाता है टू कॉपी द शिट. एग्जैक्टली. So what you are going to do is, you are going to start your own breakdown of sales letter in the carousel format after learning from that one video. One video देखी, उससे जो भी सीखा, जो भी पता किया, उसको carousel format. अब एक वीडियो की carousel 10 नहीं, 15, 20 से जितने बनते, just make it. and उसको अपलोड कर दो. रोज नहीं कह रहा, 2 या 3 दिन में एक carousel जो आपको बढ़िया दे. So तो क्या मतलब कि अभी आने वाले 1-2 महीने का content already you have that. Okay. Now here's the thing, you have to copy it in your style. Yeah. Right? What things you learn, just when you be authentic, when you be original. For example, I asked Sun, how should I create content? I don't feel like an expert. Why would someone listen to me? Sun told me that show them how you are learning. Exactly. कि तुम कैसे सीख रहे. Yeah. For example, if I want to learn about storytelling, one idea I love in that podcast, in your podcast, that Sun told you, like you put a short story, like, hey everyone, I'm learning this, and after you are learning, you can put another video, and you can told your audience like this point I have learned, like that. That's the thing I love the most. Yeah, exactly. When I tell them that I'm learning it, so they are not going to put question, hey, you are copying someone, क्या कर रहे हो, copy कर रहे हो. When I say that I'm learning from this person, so they feel okay, even that सीख रहा है, he's doing good thing. So this is how you create, or you make people see you. Right now I am learner. I always say this is something I learned, this is something I learned, this is something this is how I can teach you, this is how you can teach me. So here you are creating that authenticity, originality. So when you are creating that carousel, say that I learned this from day 1, day 2, this thing. So you are creating content consistently. So चाहे आप content वहाँ का सुन के ही अपने कुछ लिख रहे हो, you are not, of course carousel बनाने में time जाएगा, but इतना सोचना नहीं पड़ा, just you are consuming and you are doing it. And what I want to do is, for example, आपने एक breakdown में कोई चीज सीखी कि ऐसे लिखते हैं, for example, specifically. Now you are copying your thing, you are writing your own copy. So what I want you to post that also, even that hand copy. अगर आपने ऐसे कुछ लिखा है, just take the pic and send it. In the last post I told you that मैंने ये सीखा and now implemented it. बस post it. Okay. That's something. So this is now you are doing the exactly same thing. The Sun told me documenting. I am documenting my video journey and podcasting journey. You are documenting your writing journey. And writing looks
you know, people connect with these kind of writing. जब पेपर आएगा ना, जब वहाँ पे कट लगे होंगे, लगा होगा, they feel okay, this person हाँ is हाँ हाँ something. और जब आप carousel देखेंगे, then this person is also putting carousel. तो वहाँ पर वो एक नया गेम स्टार्ट हो जाएगा, where you are a learner who can beat even the master or the guru who claim to be a true. So just a learner who can beat the guru out there. So this is the Yeah. perspective people will have. yeah. Or when some company or someone who wants to hire you, this will impress them. They will, Yeah. because they will realize that this person is a fighter, and as a Yeah. freelancer they need someone who can do more work than they are assigned to. मतलब उससे ज़्यादा काम Exactly. करके दें या बढ़िया काम करके दें. So this is how you will create the thing on Yeah. LinkedIn. And don't forget about Twitter. And one thing you can do, and now you have created carousel, post it on Instagram without expecting कि कोई देखेगा. That's what Sun told me, कि post video on Twitter, shorts and everywhere. कोई देख रहा है नहीं देख रहा, just post it. So that's what now you are also creating content on Instagram as well. Because carousel works on Instagram, it takes time, but LinkedIn main होना चाहिए, वहाँ के carousel उठा के Instagram पे डाल दो. That's it. हाँ. Okay, now you are not doing anything, you are just documenting. And now you got freelancer to freelancing client, just write it. What I just write about it. When you want to write, many people say कि लिखो इसके बारे में. कब लिखना है? For example, right now, ये coaching call है या फिर you are hiring me and you just hired me, and after being hired for the first time, उसी time when I'm getting feeling कि यार मैं hired हो गया, right? At that time, in that moment. Because there. Yeah, exactly. Like you told about the free flowing, correct? Free writing, free writing. But the thing. So the thing is, if you want to write something, so आपने अभी मेरे साथ पॉडकास्ट किया है, ये 2-3 इंसाइट्स आपको मिली, मुझे कुछ मिली. So हम अगर इंस्टेंट लिखते हैं, then only we can, मतलब ज्यादा ये आएगा. उसको हम डीले कर देते हैं, तो आई थिंक वो कम हो जाता है. मतलब याद क्या हुआ था, ऐसे ऐसे करके याद मेमोरी, तो ये याद करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट टाइम हमने कोई चीज़ करी या हम किसी जगह गए, सो देर इज दैट फीलिंग कि फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है, मैंने फर्स्ट टाइम करा है. सो जब मैं उसको लिखूंगा वहाँ थोड़ी एक्साइटमेंट होगी, वहाँ थोड़ी शायद मिस्टेक भी हो, लेकिन वो जो राइटिंग के अंदर इमोशंस पुट होंगे, दैट्स गुड. अब उसके बाद मेरे को 1-2 महीने बाद बोला जा रहा है राइट अबाउट इट, या फिर अगली बार जब मैं आया, सो देयर विल नॉट बी दैट एक्साइटमेंट. वो आइडिया फ्रेश नहीं होगा. हाँ, फ्रेश नहीं होगा. या तो फिर दिमाग बिल्ड करने लगे चीजें कि कैसे इसको अच्छा बनाओ. एंड व्हेन यू आर फीलिंग, सो यू वोंट think about making it better, you will just write what you are feeling. या What you are feeling is actually beautiful. That's it. Okay. exactly. And another thing, so you got it? This thing? Yeah. Okay. Now you talked about your camera fear, that you want to be on camera, but you can't. Okay. Right now, I think you don't intend to make video content, but if you want to make your personal brand, so I will suggest you 2 things. First thing was the fact जो कि है personal brand का, that you should create, you must create video content if you want to create a personal brand. Of course, carousel से personal brand बन जाती है, चीजें हो रही होती है, but when I'm not showing my face, personal brand मतलब क्या है कि एक बंदा है and उस बंदे की पे मेरे को ट्रस्ट, उसका एक बंदा है, उसका जो पर्सन है उसका फेस ही तो ट्रस्ट है, उसका चेहरा ही तो ट्रस्ट है. When I'm not seeing your face anywhere, Yeah. so वो चीज हो नहीं पाती. So I know there are camera fears, but मेरे साथ, if you ask me that how I overcome camera fears and that thing, so I think I didn't have any camera fears. I am very okay with speaking. मेरे को बोलना वाला बहुत पसंद है, स्कूल टाइम से स्टेज पे बोलने में, तो कभी वो इशू रहा नहीं. But when I entered into it, I saw a lot of people struggling with it. Okay, so what I suggest you, and मैंने किसी और को भी suggest किया था, who's just younger than me, who's also trying to start, I want you to create a Instagram account and make it private. Okay, Okay. उस अकाउंट को प्राइवेट रखना है. मेक इंस्टाग्राम अकाउंट, एंड राइट नाउ एज आई सेड कि आपने कॉपी राइटिंग के बारे में सीखा, उस पर कैराउजल बनाए. अब हर 1 या 2 दिन में या 3 दिन में या उसी दिन जस्ट टेक योर कैमरा, सेल्फी वाला कैमरा, एंड जस्ट शूट के बट यू लर्न टुडे. ओके, फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ कमेंट करा, वो आपको पसंद आया या कुछ भी है, तो जस्ट से राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ कैमरा कि आई डिड दिस एंड आई फेल्ट वेरी गुड, आई एम growing, I am feeling good, I got hired and all those things, and just post it as a review for 1 month. Do it.
Okay. Private account and no one is going to watch you. Because why we are fear being on camera? Because we don't know how we look. We don't like the idea कि हमको कोई देखेगा कैसे, ऐसे पसंद नहीं आएगा. बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती. बाहर लोग क्या कहेंगे, दैट्स द वन थिंग आई थिंक मैटर. इधर 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 वो घर कर जाता है, दैट्स व्हाई. एग्जैक्टली, ये बहुत होता है. बट अगेन ये वाली चीज क्लीशे भी है, आपने सुन भी रखी है कि लोग क्या कहेंगे दैट डजंट मैटर. और अगर लोग क्या कहेंगे वी आर जस्ट लिविंग ऑन देयर टर्म. वी नो दिस थिंग, अगेन यू नो दिस थिंग कि लोग क्या कहेंगे इट डजंट मैटर. बट वी डोंट डू क्या दैट कि थिंग. वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो हाँ. वाली बात. सो दैट्स वेयर वहीं पे तो है कि छट जाते हैं लोग कि कुछ प्रिटेंड करते हैं हाँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, बट डीप इनसाइड मेरे को पड़ता है. ठीक है, मैं बस बोलता नहीं, मेरे को पड़ता है. एंड नाउ हियर इज द पर्सन जिसको सच में नहीं पड़ता, इसलिए वो कभी बोलता भी नहीं कि मुझे पड़ता ही नहीं पड़ता. ही जस्ट डू द थिंग. ओके. In content creation, in video content, this is too important because कोई भी social media क्या है, it gives power to anyone to say anything. आप कुछ अच्छा काम करें, there is someone commenting क्या कर रही है, बच्चों को जा ज्ञान मत दे, you know, that hateful comment, people can do that. And as a content creator, you must have that thick skin, you must have that authenticity with yourself. और हमेशा जो hateful comments है वो कम ही रहेंगे और जो अच्छे कमेंट्स है वो ज़्यादा ही रहेंगे. हमेशा उनकी परसेंटेज कम ही रहेगी. सो यू शुड नेवर एवर केयर अबाउट इट. क्योंकि कहना बहुत आसान है, बट अगेन देयर इज द थिंग व्हिच आई लर्न व्हाइल स्टार्टिंग इन कंटेंट क्रिएशन. यू नो अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प, राइट? We know Donald Trump because of those controversies. Okay, Yes. but if you know, I don't know if you know or not, Donald Trump is a billionaire. He is a businessman. He knows how to crack deal. But he does whatever he wants. Because even though all the people out there say shitty things about him, because he plays on the ground where no one is playing. Meaning कि मैं एक ऐसे ग्राउंड पे खेल रहा हूँ जहाँ पर मेरी ही जीते, जहाँ पे मैं ही खेलूंगा और अपने रूल से खेलूंगा. Okay, so that's where that when you state like this, so कोई भी hateful comment is not gonna harm. You know about Arnold? Like if you don't know, you can search. He says the same thing. And I play on the ground where no one can touch me, where no one can play like me. So when you are creating content, when I'm creating videos, so here this is my ground where no one can play like me. I am caring about people. ये ego नहीं है कि मैं अपनी तरीके से खेलूंगा. You want to play on my ground, come and join me. But if you are spreading hate, so you can't join that ground. And deep inside, who's spreading hate, it actually wants to join your ground, wants to play with you on that ground which you created. But he is willing to join or he is jealous. So he is standing out of that ground, that want to join it, but he is spreading hate. And other people who want to learn, entering into my ground and playing with me, learning with me. Yeah. So think like this. कि वो बंदा कमेंट कर रहा है गलत, और थिंक लाइक दिस कि मैं ग्राउंड में खेल रहा हूँ, वो बाहर खड़ा होकर मैंने इंतजार कर रहा है, आना चाहता है अंदर, बट ही इज स्प्रेडिंग इट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू एंटर. हियर आई एम विद. सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड इट कम्स विद टाइम. Yeah. सो स्टार्ट इट्स व्हाट आई वांट टू डू विद वन कि आप अपने आप को देखने में कंफर्टेबल हो जाओ. फॉर एग्जांपल मैं कुछ लोग वीडियो बनाते हैं जैसे यार मैं एक्शन लग रहा हूँ, बहुत गंदा हो गया यार, ये तो इतना गंदा लग रहा हूँ यार. आई वांट टू बी कंफर्टेबल. पहले मैं खुद के साथ तो कंफर्टेबल हो जाऊँ कि मैं खुद को देख के मुझे ऐसा ना लगे भाई, तो एकदम हो जाएगा कंफर्टेबिलिटी. फिर एक महीने बाद जस्ट स्टार्ट पुटिंग, एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक अ लॉट ऑफ इंकरेजमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स. अगेन चूज योर हार्ट, बंदा सीन हो जाएगा. जस्ट मतलब जैसे एक मंथ ओनली, मतलब तुम्हारा लर्निंग प्रोसेस जो भी रहेगा उसी को डॉक्यूमेंट करना है. Exactly. People will follow you. People will try to engage with you. For example, take this example. When I was on Sun's podcast, you related with me because I'm a learner. Like I Yeah. exact same question which you had in your mind, so you related with it. But अगर वहाँ पे कोई गुरु होता है या फिर कोई बड़ी पैसा बंदा होता है, you won't relate. You will say this is another people, is any other like people who's got successful, जो कि यहाँ पर ज्ञान दे रहा है या फिर जो भी कर रहा है. And when you saw someone like me, he's just a learner, he's just a student trying to learn, same like me. Let's just message him and see if we can learn from each other, if we can, do something. Yeah, that's why I reached out to you. Okay. I'm grateful that you scheduled this podcast today. It means a lot to me because that's what I intended. That's what Sun told me. If you heard the podcast, go and coach people, go and tell Okay. people,
go and tell around 100 people. So that's what I am having goal कि ऐसे जो हमारी conversation हो रही है ऐसे 100 लोगों के साथ हो. Okay. Okay. So So I that's what think you love to talk with people, one-on-one kind of thing. exactly. Yeah. So are you more into podcasting as of now? Like you are concentrating more on podcasting? Yeah, I am concentrating on 2 channels. First is this podcast channel where I'm interviewing the people. Second is about my own channel where I am talking about this content creation thing, creating content. And right now, what idea I'm having, I'm sharing with you. I have not uploaded any video or short and shoot anything. What I'm going to do is what I have learned, and you can try it as well. That I came across this concept of making someone mentor. कि कोई mentor होना चाहिए हमारे जीवन में. और there used to be a traditional way कि मुझे अगर किसी को mentor बनाना है, he is successful, so I go to him, work for him, anything like that. उसको बोलूँगा कि मुझे सिखाओ, and वो सिखाएगा. And it still happens in today's world as well. But right now, I say online, how you can make anyone your mentor. So what I'm planning to do is I'll tell people in my other channel how to make anyone your mentor. The question is how. For example, he right now he had some books. उसने कोई book निकाल रखी. He had his own YouTube channel. He goes to the podcast. He tells everything which he's learning. He is documenting his own journey of entrepreneurship, of marketing, or anything else. And now I will create a framework कि आज के दिन मैं उसके 4 ट्वीट थ्रेड पढ़ूंगा. आज इसका एक बुक का चैप्टर और एक उसके यूट्यूब चैनल. Whatever I will learn, I'll try to implement it. So that's what I'm going to create on my other channel. I will try to make Alex Sarmozy my mentor. What I will do, I will create a framework कि आज के दिन day 1, 4 tweets, 1 chapter, 1 YouTube video, what I learned. Then again day, now how will I implement it? I'll see, I'll observe कि भी क्या करूँ, कैसे implement करूँ और उसको भी document करूँ, and then I'll show it. That's the first thing I'm going to do there. I'm making Alex Sarmozy my mentor and documenting everything I'm learning. Other than that, what I'm going to do on my other channel is, I think right now I am so much into storytelling, learning storytelling. As son teaches storytelling, so whatever he's teaching me, I am learning from him and writing my own stories. I am just showing that how I am being a storyteller. So that will be another thing. Like I am trying to make a playlist kind of thing, a show kind of thing. Okay. And I'll be waiting for that. the story of being storytelling. So that's what. Okay. So that's what I am going to start on my other channel. On this channel, I'm trying to learn from the people out there by inviting them on my podcast. Of course. That's Okay. Okay. Thank you. So when did you join the Night Owl Nation? I think it's been 4 months, 3 or 4 months. Yeah. Okay. 3 months or 4 months. Okay, that's. So are you part of Night Owl Nation right now? Yes. Okay, that's good. So that's all. That solves a lot of problems. So one more question I have. Who are your favorite creators except Alex Sarmozy? Okay. Like about favorite creator, like in India? No, not in India. You can tell, like globally also. Including India also. So I think there are a lot of people I follow, which I really like. For example, Sun is there. And like Patrick David, the Valuetainment, I follow him. Like he's good. He creates good content and he's original. And I think that's it. Alex Sarmozy, Patrick David, that's it. What Indian creators? In India, I think there is... Sorry? Indian creators? Indian creator, I don't find anyone worth following. Like, genuinely. Because they are not creating content to serve the people. They are creating content to build the business. Okay, there is a creator which I follow. I forgot him. I think, as I said, that I consumed a lot of finance content. I read about finance. So there is just one creator
in India and even in, I think in, अगर आप बाहर की भी लोगों को जोड़ लो, so that one creator, his name is Akshay Srivastava. When it comes to finance, I think the way he creates videos is phenomenal. वो जिस तरीके से वीडियो क्रिएट करे, जिस तरीके से, a lot of creators don't touch politics or even the religion. The reason is because people get intense, और वो बहुत पेचीदा और गंभीर टॉपिक है जो मैं खाने से डरूंगा, because अगर मैं कुछ गलत कह दिया पॉलिटिक्स में, there are lot of people backlashes हो जाते हैं. But the way he takes those politics topics and, और उसमें एक चीज है, लाइक फाइनेंस, थोड़ा फाइनेंस की चीज में जा रहे हैं कि जो फाइनेंस वर्क कैसे करता है. ही टॉट मी दैट गवर्नमेंट controls economy, economy controls finance, and finance controls stock market and eventually money. So if you are not able to understand government, so how you are able to understand, stock market and finance? And a lot of creators who take up personal finance, they don't know shit about government. They don't talk about government. So he takes government and politics topic and connects with the finance. So that's the thing that only he can do. Yeah. So that's why I think he is my favorite creator. And one more thing, कि whenever you are following someone, for example, as I said, कि किसी को अगर mentor बनाना, if I want to make someone my finance mentor, I would make Akshay Srivastava my mentor. For example, आपको किसी को अपना mentor बनाना है, तो first thing क्या करनी है? For example, take example of Ankur Waiku, we know all about him. I can't make him my mentor. The reason is, he started channel with the personal finance content, and now his all videos are all about self-help, and his Twitter, LinkedIn, and YouTube are quite different. A lot content differs. It's all about self-help. Now his book is also all about self-help, and now his courses is all about creating content on Instagram and YouTube. How to YouTube. So that I'm not spending any hate, but I will not choose him as my mentor because he's not teaching the one thing. If I take example of Alex Salmosi, he's teaching exact same thing again and again: entrepreneurship, marketing, how to build, how to scale, how to be good at, marketing, copy, these things again and again. So that person is worth making a mentor to me because वो same content बना रहा है. मैं बस आज personal finance का भी नहीं बना रहा, फिर अगले दिन में self help नहीं बना रहा हूँ. So that's something I will not do, and that's something I also intend कि अभी मैं content बना रहा हूँ कि कल को मैं कहीं switch ना कर लूँ, self help में ज़्यादा ज्ञान ना देने लग जाऊँ. It's about one big idea. So this kind of, yeah. So that's why so जिसको mentor बना रहे हो, you should have these things in mind. अंकुर वारिको का वही मतलब बहुत मिक्स मैच लगता है. कभी सेल्फ हेल्प, कभी जॉब रिलेटेड, कभी क्या मतलब कभी यूट्यूब, कभी कम्युनिकेशन, क्या तो समझ नहीं आता. Right? Here's the thing. If you see, his content is repetitive. Content repeat होगा. Like अगर उसको follow जो कर रहा होगा, जो उसको 3 साल पहले follow कर रहा होगा, वो उसको follow कर ही नहीं रहा. And the fact is, he knows this thing. उसको पता है कि उसका content repetitive है. What he says is कि I know my content is repetitive, but here's the thing कि अगर जब आपको लगने लगे ना that my content is being repetitive, कि repeat हो रहा है, that means you are graduated from my class, you have passed my class, you can go to the other channels who are more expert than me. It means he is self-aware कि मेरे को इतना ही बताना है, इतना अगर आपको पता चल गया repetitive हो रहा है. So go to the other channel, for example, Akshay Srivastava. He used the same word. For example, Akshay Srivastava के channel पे जाओ, he's talking more elaborately. So that's the game of content creation. That's why he's winning, because he knows what he's doing. कि मेरा content repetitive है. So जो 3 साल पहले देख रहा है, अगर 3 साल उसने देख लिया, 1-2 साल, तो वो नहीं देख रहा होगा because उसे पता है. अगर नहीं देख रहा तो अच्छी बात है कि वो graduate हो गया, मुझे वो चाहिए भी. So that's the clarity he had in his mind. That's what makes him stand in the world of content creation. And we as a creator or the learner, we should see the strategy, not just this thing, same content. We are not audience who just dissatisfied. We are a content creator, students and learner. We have to observe. क्या यार ये चीज अगर मुझे दिख रही है, कंटेंट रिपीट हो रहा है, तो इसको नहीं दिख रही होगी, इसका तो खुद का कंटेंट है. So when I even joined this course about YouTube, so in that channel, in that course, he talked about this thing. I know my content is repetitive. So he's following that strategy. For example, if I take example of Ranveer Alabad, so he's like switching a lot of content. Start किया grooming से, बाल कैसे बनाने, कपड़े कैसे पहनने, ऐसे कैसे जाना है. अबे उनका भी तो पूरा सेल्फ हेल्प से लेके स्पिरिचुअलिटी से लेके रिलीजन से लेके एवरीथिंग इज देयर.
तो इसका कंटेंट वैसा है, ही इज डूइंग दैट. सो इट्स नॉट अबाउट सीइंग अदर, इट्स अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल कि मैं अभी पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ या फिर मेरे को लगे कि यार ये वाली चीज़ करनी चाहिए, इफ आई एम ओरिजिनल, सो आई विल टेल पीपल दैट आई एम गोइंग टू ट्राई दिस थिंग, दे विल फॉलो. फॉर एग्जांपल इट्स अबाउट लव. अगर मैं वहाँ पे एक लव जनरेट हो गया कि हाँ मेरे भाई जैसा है, मेरे बेटे जैसा है, मेरे छोटे भाई जैसा है, बड़े भाई जैसा है, सो इफ आई डू समथिंग न्यू, सो वो फैमिली वाला हो जाएगा कि कुछ नया कर रहा है, लेट्स जस्ट सपोर्ट हिम. दैट्स व्हाट आई वांट पीपल टू फील अबाउट, एंड दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल फील अबाउट अंकुर वारिक, कि he Yeah. failed many times and now he doesn't want us to fail, so he's like our big brother, he's like our uncle, so we want to follow him. Although he doesn't like to be called uncle. वन मोर आइडिया लाइक मतलब सन ने आपको जैसे बताया कि कंटेंट क्रिएशन के टाइम एवरीवन पुटिंग सक्सेस स्टोरी, बट यू शुड आल्सो पुट योर फेलियर स्टोरी आल्सो, दैट आल्सो हिट मी मोर. Yeah. लाइक आपको ये करना चाहिए कि आप क्या सीखा, क्या फेलियर है आपका, ये सब भी आपका कंटेंट रहना चाहिए कि पीपल आपके साथ रेजोनेट कर पाए, दे आल्सो कैन लर्न फ्रॉम इट. So, but here's the thing, that it also becomes complicated when you start creating how to show my failures. For example, I said कि मैं Alex और Murphy को मैं mentor बनाऊंगा और वो चीज़ें implement करूँ. For example, I failed at implementing. ठीक है, the first thing कि मैं उसको show करने से पहले खुद accept करना सीख. And I failed. And now, as I promised to my audience, I will document. I have to document. I have to give it a touch. Now, अगर हमने अंकुर वारिक से फेलियर वाली हमने बात करी, when he failed at that time in his 20s, उस टाइम इतना ज्ञान नहीं आ रहा था. उस टाइम he was just कि क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ. अब उस टाइम को तो ओपन योर कैमरा एंड दिखाओ फेलियर. इससे पागल है क्या? लाइक फॉर एग्जांपल अंकुर वारिक को इन 20s के पागल है क्या? आई एम जस्ट फेलिंग एट एंड यू वांट मी टू क्रिएट कंटेंट ऑफ माय फेलियर. So, first thing first, you have to accept it. Ki how it failed. Well, now you have to learn how to show it. Okay. Open to acceptance. Because if you have accepted, if you have given your touch, now you can document it. That's why on Instagram no one shows their failures. Because it's not easy. Exactly. वो सोचते हैं कि जब फेलियर्स खत्म हो जाएंगे, सक्सेस आने लगेगा ना, तो just इंस्टाग्राम में ऐसे लगता है, हाँ इंस्टाग्राम में एवरीथिंग लगता है ये तो बहुत बढ़िया है यार, ये तो इसको इतना एक्सपीरियंस है, ये तो पूरा परफेक्ट है, बट हाँ बैक स्टेज में वो भी कितना स्ट्रगल करके आया है, वो जर्नी तो आपको पता ही नहीं है. Exactly. And I think that's the best part, which I feel कि जो वो अमेरिका है, वो जो जितना स्ट्रगल करके आया, he didn't document it. So right now the thing is कि we are documenting it. That's why we are going to win. कि हमने वो 3-4 साल जो लोग सोचते कि यार फेल तो हुआ होगा नहीं है, कुछ तो हुआ होगा ना, तो वो चीज़ें हमको दिखानी है. And that it's not easy. Son told it, but it's not easy. Right? What I realized कि first of all I have to accept it कि I failed, and then I have to learn how to document it, how to show it, how to hide it. Because I don't want to make a sad video. मैं fail हो. I don't want to be a victim in my video. I want to learn कि I learned and I failed. So वो जो दिखना, I just played the game. मेरे वो, yeah, that's it. I played the game and I will again play. I don't want my audience feel like a failure with me. I want them to feel like that I am winning, I am losing, so that I can win something. कि मैं हार ही अभी इसलिए रहा हूँ, for that one day when I will win, and when I will win, I'll again document it and I'll enjoy with you, I will celebrate with you. So we will, I and my audience will wait for that one day कि एक दिन होगा when this person will shine, because when this person will shine, उसके साथ हम भी shine करेंगे, because we have been seeing him from the scratch when he didn't have any. So it's a long game. Exactly. That's what I am playing, and that's what I want you to play as well. Yeah. So anything you want Okay. from me? So no, just मैं बस ये चाहता हूँ that if I am this, you are my first person on my podcast whom I am trying to give some insight. I want you to do whatever I said, and I want, because this will help. I want you to be consistent. Yes, well, I think As I told you. you taught me many things, like for example in copywriting only. I'll take one thing only. So you told in the past 6 months how you have practiced, what mistakes you did, what to focus on. That's the thing. So I have to implement. If I'll do
I'll not follow the thing. I'll do the same mistake like you. Just consuming the content, not doing anything. Consuming the content, not doing anything. Exactly. So just do this, Yeah. okay? And let me know, and you will do something big, and it will be very happy moment for me that I helped someone and that person is doing much well. Yeah. Okay? So I think I think this is the first time someone hosted me for the podcast. For the podcast. Feeling very much grateful. Like, that's so sweet. thank you so much. So thank you. Milte. Yeah. Okay. Bye bye.